हेलो एवरीवन, फील द जॉय ऑफ लर्निंग फिजिक्स विद हेमंत सर। आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value. Now what do you mean by measured value? मैंने आपको कहा measure length of this cell, तो आपने length measure की and that value is known as measured value. तो whatever value you are saying, that value is known as measured value. तो आपने कहा length of the cell is 5.1 सेंटीमीटर और मैं ऑलरेडी मेजर कर चुका हूं इसकी लेंथ और विथ ऑल प्रिकॉशन, तो दैट लेंथ इज 5.0 और दैट लेंथ इज ट्रू वैल्यू। नाउ डिफरेंस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। और मैंने किसी एक दूसरे स्टूडेंट को कहा कि नाउ मेजर द लेंथ ऑफ दिस सेल और उसने इस लेंथ मेजर की एंड ही इज सेइंग द लेंथ ऑफ दिस सेल इज 4.8 सेंटीमीटर। आई नो द ट्रू वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू और द स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? दिस इज प्लस 0.2 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। नाउ यू कैन सी हियर Here in first case measured value is more than true value, तो एरर कैसी आई? एरर इज नेगेटिव। सेकेंड केस में क्या हुआ? सेकेंड केस में measured value is less than true value, तो एरर आई पॉजिटिव। It means error may be negative, error may be positive, it depend upon measured value and true value. If measured value is less, then positive. If measured value is more, then it is negative. We can write measured value is equal to true value plus minus error. Final value in any measurement depend upon two factors. First factor is individual value and second factor is mathematical operation. तो पहला केस हम ले रहे हैं error in sum of two quantity, but क्या कंडीशन होनी चाहिए? Quantity should be same, means length can be added, length can be subtracted, or mass can be added, mass can be subtracted, but you cannot add length and mass. तो in case of sum and difference, both the physical quantity should be same. तो हम assume कर रहे हैं कि A is any physical quantity and B is also same physical quantity but value is different. तो हमने पहला केस लिया error in sum of two quantities. तो हमने assume किया A is any physical quantity. It may be mass, length, time, force, impulse, any physical quantity. So we are representing any physical quantity with A and B. But remember this thing, A and B should be same physical quantity. So we will write measured value of A equal to true value of A plus minus error in A. We can write in terms of mathematical notation. So we can write A plus minus delta A. Delta represent change. So we can write A is equal to A plus minus delta A. Similarly, we can write measured value of B equal to B plus minus delta B, and measured value of Z is equal to Z plus minus delta Z.
Now what is Z? Here Z is sum of A and B. So this is Z is equal to A plus B. Z is measured value of Z, A is measured value of A, B is measured value of B. Now we can substitute the value. Z plus minus delta Z equal to A plus minus delta A plus B plus minus delta B. We can write A plus B plus minus delta A plus minus delta B, and here we'll write Z plus minus delta Z. What is A? True value of A. What is B? True value of B. A plus B is what? A plus B is Z. It means true value of Z. We can write Z plus minus delta Z equal to Z plus minus delta A plus minus delta B. This will be cancelled. Now we can write maximum permissible error. So what will be the maximum permissible error? Maximum permissible error. We can write delta Z is equal to, we'll take only positive value, delta Z equal to delta A plus delta B. So here when two quantities are added, then errors are also added. Now what will be the final result? Final result within error limit will be Z is equal to Z plus minus delta Z. Z means A plus B. We will add two true values, and delta Z we will add delta A plus delta B. We can calculate relative error or percentage error also. We will write percentage error delta Z divided by Z multiplied by 100%. So in this way we can calculate percentage error. Now it will be more clear when we will solve numerical. Two resistors of resistances R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? Now what will be the solution? R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm. R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm. Now this 100 is a true value, this is your error, and this is your measured value. So measured value of resistance R1 is equal to true value of R1 plus error in R1. So what we will write here, when resistors are connected in series, we write R is equal to R1 plus R2. This R is a true value of R. R1 true value of R1, true value of R2. So we will write 100 plus 200, it becomes 300 ohm. Now you know when quantities are added, means R1 plus R2, then their errors are also added. Delta R1 plus delta R2. So we can write change in resistance 1, 3. 3 plus delta R2 means 4. It becomes 7 ohm. Now what will be our final result? Final result will be R is equal to R plus minus delta R. We will write R. R means 300 ohm. We will write 300 plus minus delta R means 7. So we will write 7 ohm. This is our final result within error limit. Now we can write percentage error also. So percentage error in R. Percentage error in R. Delta R divided by R multiplied by 100%. It will be equal to delta R upon R. Delta R means 7. This is 7.
and R, it is 300. 300 multiplied by 100%. We can write 7 by 3%. Why? Because this 0, 0, 0, 0 cancel. 7 by 3. We can write in this way also. This is 2.33%. Now we can write final result in this manner also. R is equal to, this become what? This become our percentage error. But final result we can write in terms of percentage error also. 300 ohm plus minus 2.3%. This is the another way of writing equivalent resistance within error limit. So here we are writing in terms of percentage and here we are writing in terms of value. So next question is the length of two rods are recorded as L1 equal to 25.2 plus minus 0.2 centimeter and L2 is equal to 16.8 plus minus 0.3 centimeter. Find the sum of the length of two rods with the limits of error. We will solve. What is given? L1 is equal to 25.2 plus minus 0.2 centimeter. L2 is equal to 16.8 plus minus 0.3 centimeter. This L1 is a measured value of L1 which is equal to true value of L1 plus minus error in L1. Similarly, measured value of L2 is equal to true value of L2 plus minus error in measuring L2. Here we are using sum. It means we have to add the true value of total length L is equal to true value of L1 plus true value of L2. We will write 25.2 plus 16.8. It become 42.0 centimeter. In case of sum, we add error also. So delta L is equal to delta L1 plus delta L2. What is delta L1? Delta L1 is 0.2 plus 0.3. It becomes 0.5 centimeter. Now we can write final result. Final result within error limit, we can write L is equal to L plus minus delta L. What is L here? This is 42.0 and error is plus minus 0.5 centimeter. We can calculate percentage error also. Percentage error, which is equal to delta L upon L multiplied by 100%. Here, what is delta L? Delta L is 0.5, L is 42 multiplied by 100%, or if you divide, this is 50 divided by 42 multiplied by 100%. Answer will come 1.2%. We can write final result. We can final result in terms of percentage error also. So final result or final length, we can write L is equal to, this is 42.0 centimeter plus minus 1.2%. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर मेजर्ड एज. तो पहले ये मालूम हो कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होता है. एक्चुअली ये क्वेश्चन था कंपटीशन का क्वेश्चन, और ये जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर्स है ये रिलेटेड है क्लास 12th है. तो मैं बता दूं आपको कि कैपेसिटर्स क्या होता है. ये ऐसी डिवाइस होती है, ये है कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर है. तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज.
उसको हम कहते हैं कैपेसिटर, और उसका सिंबल ऐसा होता है, ये दो पैरेलल लाइन, दिस रिप्रेजेंट कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो जो कि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। और हम कैसे मेजर करते हैं? कैपेसिटेंस मेजर इन टर्म्स ऑफ फैरड, तो फैरड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और माइक्रो म्यू, आपको मालूम है माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, म्यू इज मल्टीपल, तो इसलिए हमने यूनिट लिखी है माइक्रो फैरड। फैरड इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट और फैरड इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। In an experiment, capacitance of two capacitors are measured as C1 equal to 1.3 plus minus 0.1 microfarad and C2 is equal to 2.4 plus minus 0.2 microfarad. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स और व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वी राइट Cp इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है? वैसे ही रहता है जैसा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है, बट अपोजिट, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बट जब कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो हम फॉर्मूला लिखते हैं Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और ये आप डिराइव करोगे क्लास 12th में। हम केवल फॉर्मूला यूज करके देखें क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्या होगा? C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दिस इज ट्रू वैल्यू 1.3 प्लस 2.4, तो व्हाट इज द नेट वैल्यू? नेट वैल्यू ये हो गया आपका 3.7 माइक्रो फैरड। बिकॉज यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? यहां यूज कर रहे हैं सम एज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हमने यूज किया C डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। एरर्स विल बी एडेड, तो क्या एरर है C1 में? C1 में 0.1 प्लस इसमें एरर है 0.2, तो वी विल ऐड, दिस बिकम 0.3 माइक्रो फैरड। तो व्हाट इज आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी Cp is equal to Cp plus minus delta Cp. This Cp is the measured value of Cp is equal to true value of Cp plus minus error in Cp. So what is the true value of Cp? This is the true value of Cp, 3.7 plus minus then 0.3 microfarad. This is our answer. We can calculate percentage error also. So what will be our percentage error? Percentage error in capacitance equal to delta Cp upon Cp multiply by 100%. Delta Cp 0.3, Cp 3.7 multiply by 100%. So we can write 300 divided by 37 and answer will come, this is 8.1%. So final result we can write, final result means equivalent capacitance we can write, equivalent capacitance we can write in terms of percentage error also, and it becomes Cp is equal to 3.7 microfarad plus minus 8.1%. अब नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन है डिफरेंस, तो वी विल कैलकुलेट
error in difference of two quantities. But the quantities कैसी होनी चाहिए? Same. Similar quantities can be subtracted. तो measured value of A is equal to true value of A plus minus error in A. A may be any physical quantity, length, mass, time, temperature, anything. Similarly, we can write measured value of B is equal to B plus minus delta B. Similarly, we can write measured value of Z is equal to Z plus minus delta Z. Now here A and B are related as minus. So Z is equal to A minus B. So we will take the difference of two quantity A and B. Z is measured value of Z, measured value of A, measured value of B. So we will write Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A minus B plus minus delta B. A minus multiply by B, so minus B, plus minus delta A minus multiply this, so minus plus delta B. Now A minus B, true value of A minus true value of B, this become true value of Z, plus minus delta A minus plus delta B, and he will write Z plus minus delta Z, this Z cancel. Now we will write maximum permissible error. We will take only positive value because we want maximum permissible error. So delta Z only positive value, delta A plus delta B. Now you can see here A and B is subtracted, but the error will be added. We can write final result. Our final result will be measured value of Z is equal to true value of Z and plus minus error. This will be the final result. Similarly, we can calculate percentage error also. Percentage error. So percentage error can be calculated as delta Z divided by Z multiplied by 100%. Now it will be more clear when we will solve numerical. Now our question is, the initial temperature of a liquid is recorded as theta 1 is equal to 32.4 plus minus 0.3 degree centigrade. On heating, its final temperature increases to theta 2 is equal to 52.7 plus minus 0.5 degree centigrade. Find the increase in temperature within error limit. We can calculate. So what will be the solution? Here we are taking the difference of two temperature. This temperature is the final temperature. This is our initial temperature. So we will write theta is equal to theta 2 minus theta 1. Now you can see here similar quantity, both are temperature. So similar quantities can be subtracted. Minus sign we are using. तो हो गया 52.7 माइनस 32.4. आंसर क्या आएगा? दिस विल कम 0.3. ये हो गया 0. ये हो गया आपका 20. तो 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज योर थीटा. नाउ व्हाट विल बी द एरर इन मेजरिंग टेम्परेचर? तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 1 plus delta theta 2. Now be careful, here we are adding errors. True values are subtracted, but here we are adding errors. So we will add delta theta 1, this is 0.3 plus 0.5
5. This becomes 0.8 degree centigrade. So what will be our final result? It means increase in temperature. So increase in temperature, it will be theta, ये theta plus minus delta theta. And what is our theta? Theta is 20.3 plus minus 0.8 degree centigrade. Percentage error we can calculate. Percentage error. So what will be our percentage error? This will be delta theta upon theta multiplied by 100%. So we can write delta theta is 0.8, theta is 20.3 multiplied by 100%, and it will come 3.94%. So we can write our final result. It means increase in temperature in terms of percentage error also. So we can write 20.3 degrees centigrade plus minus 3.94%. The next question is the length of two rods are measured as L1 equal to 7.31 plus minus 0.06 centimeter and L2 is equal to 6.29 plus minus 0.03 centimeter. Calculate the difference in length within error limits. तो कैसे calculate करेंगे? Here we have to take difference. तो difference निकालते हैं. यहाँ लिखा L is equal to L1 minus L2. What is L1? 7.31 minus 6.29. क्या ही error? Error will come. This become 1.02 centimeter. This is your difference in two length. Now we can calculate error also. Delta L is equal to delta L1 plus delta L2. Delta L1 is 0.06 plus 0.03. It becomes 0.09 centimeter. So what is the difference in length? We can write difference in length. We can write difference in length. कितना होगा? This will become L plus minus delta L. Now what is L? This is 1.02 plus minus ये आ गया 0.09 centimeter. We can calculate percentage error also. Percentage error किसमें? In the difference of length. So this becomes delta L upon L multiplied by 100%. It will become 0.09 divided by 1.02 multiplied by 100%. Now third question है स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, और ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ये चैप्टर डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनामिक्स में. बट ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया और इससे रिलेटेड है एरर इन डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी में, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. तो पहले समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू इंक्रीज 1 मोल ऑफ गैस through 1 degree centigrade is known as specific heat of a gas. और आपको मालूम है कि when we are giving heat to a gas, then two things will occur. Pressure will change and volume will also change. तो हम क्या करते हैं? If we keep pressure constant, volume will change. या फिर हमने कहा volume is constant, then pressure will change. तो that is why there are two types of specific heat of a gas. First, CP. CP means specific heat at constant pressure, और दूसरा V, तो specific heat at constant volume. हम निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, इसका क्या होगा.
और डिफरेंस होता है Cp माइनस CV इज नोन एज R। इसका दूसरा नाम भी, इसको कहते हैं मेयर्स फार्मूला। R इज नोन एज रियल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। तो यहां पे निकालना है हमको R की ट्रू वैल्यू और R की एरर। तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट Cp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 12.28 माइनस 3.97। देखें क्या डिफरेंस आता है। ये आ गया आपका 1, यहाँ से आ गया आपका 3, ये आ गया 8.31 और हम यूनिट लिख रहे हैं यूनिट। ये हो गया आपका R। अब निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा R इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि जब भी डिफरेंस निकालें या सम करें हमेशा एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो एरर इन मेजरिंग Cp ये आ गई 0.1 प्लस एरर इन मेजरिंग CV ये एरर हो गई 0.3। तो टोटल एरर हो गई 0.4। ये हो गई आपकी यूनिट। तो व्हाट इज आवर फाइनल रिजल्ट, R इज इक्वल टू R प्लस माइनस डेल्टा R। R क्या है, 8.31 प्लस माइनस दिस इज 0.4 और दिस बिकम यूनिट। अब कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर किसमें, इन R इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई बाई 100%। व्हाट इज डेल्टा R, डेल्टा R इज 0.4। तो 0.4 डिवाइडेड बाई दिस इज 8.31 मल्टीप्लाई बाई 100%। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।